भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हर क्लास में नया फेसेस मुझे देखने मिलता है, नए लोगों का चेहरा, अच्छी बात है। आप लोगों का नाम क्या, एक बार मैं थोड़ा सुन सकता हूँ? मतलब सब नए हो तो मुझे पहचानने में थोड़ा ये डिफ़िकल्टीज होगी। आपका नाम क्या है? तनुजा। आपका? शुभी। ओके। आपका? निधि। वैष्णवी। क्या बात है, कोई तो वैष्णव आया है हमारे क्लास में, अच्छी बात है। आपका? अमृता। काजल। आई तो नो एवरीवन फ्रॉम द बॉयज साइड। बाकी के जो माता जी थे वो लोग का कुछ अपडेट नहीं है वैसे। ठीक है, आई थिंक वी शुड हैव वन माता जी हु कुड कोऑर्डिनेट विद द माता जी साइड में वैसे। सो हरे कृष्णा। आई थिंक आप सब लोग बाकी आपके मम्मी पापा के प्रोग्राम्स में वैसे आते हो कि आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। एक तरफ से आप लोग का सौभाग्य है कि आप लोग आज के सत्र में या क्लास में आए हो जो कि श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को तो टाइटल पता नहीं होगा, बट जिन लोगों को टाइटल पता है, कैन एनीवन से व्हाट इज द टाइटल ऑफ टुडेज क्लास? हार्ट। ओके, कोई और डीप में जा सकता है? The alchemy and alchemists of today's world can turn anything into gold, but the alchemists of the spiritual world can convert anyone into a happy person. Right. So actually मैंने टाइटल क्लास का ऊपर लिख दिया, आप लोग देख के भी बोल सकते थे। So the title of the class is The Spiritual Alchemist's Touch, okay, and a heartfelt journey with Srila Gopal Bhatta Goswami. So सबसे पहले एक्चुअली जो वर्ड यूज़ किया लोग दे आस्क में वाई डू यू मेक सो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, जो इतने आसान शब्दों में भी बताया जा सकता है, तो आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? बट एक्चुअली द स्टोरी जो आज है ना पूरा, उसके पीछे का जो वर्जन है दैट इज़ द साइंस और लॉजिक बिहाइंड, जो मैंने टाइटल भी इतना सोच समझ के रखा है। सो फर्स्ट लेट मी अंडरस्टैंड, हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड एल्केमिस्ट? कभी सुना था ये वर्ड? सुना है। अच्छा, कितनों ने सुना ये वर्ड? अच्छा, ठीक है, 0.1% इन द क्लास, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू नो बाय द वर्ड एल्केमिस्ट? ये जनरली एंशिएंट टाइम्स में बोलते थे, 14th या 15th सेंचुरी के आसपास पोएम्स वगैरह में होते थे। परफेक्ट। तो काइंड ऑफ मैजिशियंस जो किसी भी चीज़ को टच करके उसका जो मेन मटेरियल नेचर है उसे चेंज करते थे। गुड, यू चोज द राइट वर्ड। They used to change the form of the existence. If it's a metal, they would convert it as a gold. I draw this inspiration. Acha, by the way, anyone has read the ever famous book in the modern times written by Paul Coelho, that is The Alchemist? ये वो बुक सुना नहीं है? अगर आप गूगल करोगे कि वर्ल्ड में टॉप 10 बुक्स मस्ट रीड, पॉल कोएलो का बुक आपको टॉप नंबर पे दिखेगा। दैट इज़ हाउ फेमस द पॉल कोएलो's द अल्केमिस्ट बुक इज ऑल अबाउट। जस्ट अ मिनट। Okay, so well actually I also read this book quite a long time ago when I was a kid, and trust me, it's such a rich book with the stories and I was inspired. But when I came to bhakti in Krishna consciousness, then I realized who is the real alchemist. So basically मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि the word alchemist का मतलब क्या होता है। So जैसे इन्होंने बताया, alchemist is historically he was a person, actually he would be a person right now also, who practices alchemy. Alchemy एक साइंस की फील्ड है
जहाँ पे इन अ मिडिवल, एज आई सेड दैट कि 14th-15th सेंचुरी, इन द मिडिवल इट वॉज अ प्रोटो साइंस where the alchemists used to turn the basis of the metal ores to the gold. वो convert करते थे metal ores को gold में, and more than that they used to discover the elixirs. जो elixir मतलब आप बोल सकते हो अमृत या एक ऐसी औषध जो आपको लंबी आयु दे सकती है, वैसा they used to discover that elixirs for life and the health. यही चीज़ सिम्बॉलिकली पॉल कोएलो ने अपनी बुक द एल्केमिस्ट में पूरा डिटेल में वर्णन किया है, जहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम सैंटियागो है या सांटियागो है, आई फॉरगॉट इट, हु अंडरस्टैंड्स द लाइफ्स डीपर मीनिंग एंड ही फॉलोज हिज इंट्यूशन वेर ही सीज अ ड्रीम एंड अ विजन and he achieves his personal legend or what we call as a destiny by walking on that path. Similar ये story है, that's it. बट अपने क्लास का डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दूर दूर तक इस सभी पात्र के बोलते हैं ना वो स्टार्ट होने से पहले सूचना आती है, इसका कुछ लेना नहीं है पॉल कोएलो की बुक से, इट जस्ट इंस्पायर्ड टाइटल है, दैट्स इट. So in our today's discussion, the true, the eternal and the spiritual alchemist is none other than, कोई guess कर सकता है? Lord Krishna. In what form? अगर exact name अगर मुझे use करना हो तो? As a guru, spiritual master. As a guru, as a spiritual master. Very close. So the eternal spiritual alchemist in our age is none other than Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Shri Krishna himself, came 500 years back. किसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है? आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? कौन थे वे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने एक्चुअली बहुत डीप क्वेश्चन पूछ दिया पहले दिन आप लोगों को, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. So we will understand that through our today's story, the alchemist touch, how Chaitanya Mahaprabhu's touch, and he is a true alchemist, how his touch made a heartfelt journey of Srila Gopal Bhatta Goswami. So पूरा आज का जो क्लास होने वाला है, एक व्यक्ति के पूरे चरित्र को बता रहा है कि कैसे उसकी जीवन शैली रही है, पूरा उनका जीवनचर्या रहेगा. आई ट्राइड बेस्ट टू मेक इट इन अ स्टोरी हिंदी फॉर्म में, बट एज यूजुअल मेरी हिंदी बहुत बेकार है, तो इंग्लिश में जितना बोल सकूँ उतना समझ जाना. इंग्लिश आप लोगों को समझ में आएगा? ठीक है, मैं कोशिश करूँगा हिंदी बोलने की, बट कोशिश ही करता रहूँगा, बोल नहीं पाऊँगा. ठीक है. सो एक्चुअली मैंने टॉपिक भी क्यों यूज़ लिया बिकॉज अभी जस्ट हमने 3 दिन पहले श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का अपीयरेंस डे सेलिब्रेट किया. कोई बता सकता था कभी था वो? वेडनेसडे. और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा. पूछो क्यों? क्योंकि मुझे टेम्पल में जाना था ऑफरिंग करने के लिए एंड लॉट ऑफ क्लासेस एंड ऑल दैट पार्ट, बट आई वाज एंजॉइंग विद माय कंपनी एट ऑफ साइट. इसलिए दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा. Anyways, jokes. I think they shouldn't hear all these things. Anyways, so first of all, let me confess to you all, I'm nowhere a qualified, I'm nowhere a pure person, I'm nowhere a humble person, I'm not even very close to a tinge of a pure devotional service who could dare even to speak about Goswamis of the Vrindavan. I'm just making this bold and brazen attempt to share with you all so that I can bring myself closer to the purification by speaking the glories, eternal glories of Srila Gopal Bhatta Goswami. And this is just a service given to me by my spiritual master, so I just making some bold attempt to speak on Goswamis. Otherwise, I have no qualification. I just pay humble obeisances at each one of us lotus feet. So let me ask you first, what does the word Goswami means? आप लोगों ने बहुत सुना रहेगा ना गोस्वामी. आजकल लोगों के सरनेम के पीछे भी गोस्वामी लग जाता है. तो क्या है गोस्वामी का अर्थ, कोई बता सकता है? One who has controlled his mind and senses is called a Goswami. Wow, good. Go means senses and Swami means the master. Wow, अच्छा. तो गोपाल का मतलब? Gopal means गायों का रखवाला, गायों को पालने वाला, और वही सेंसेस को पालने वाला, मास्टर करने वाला. गुड गुड. आई वाज ट्राइंग टू कंफ्यूज कि आपके गोस्वामी और गोपाल में कंफ्यूज ना हो जाओ. और किसी को पता है गोस्वामी का मतलब? अच्छा, सब लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है. एक्चुअली इसका ट्रू एंड स्क्रिप्चुरल मीनिंग व्हाट ही सेड इज पार्शली अप टू करेक्ट, बट आई विल गिव यू कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट.
You can find the meaning of Goswami in Nectar of Instructions के first very verse में. It says that वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्. ये संस्कृत वर्स है, जिसे नहीं समझा मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताता हूँ. It says that a sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's action demands, the actions of anger, the urges of the tongue, okay, the belly and the genitals, is qualified to make disciples all over the world. अगर आप ये सब कर सकते हो तो आप गोस्वामी हो और आप जगत में जाके शिष्य बना सकते हो. कौन है जो ऐसा व्यक्ति कर सकता है सब? Getting it? It's very difficult. So actually he said go means senses, Swami means master. So one who has complete control over his senses is known as Goswami. And in this verse it has stated the 6 items. The 6 items are speech. इसलिए लोग ना तीखा बहुत बोलते हैं क्योंकि उनको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहती है, इसलिए कंट्रोल आना चाहिए. बोलते हैं ना थोड़ा सा भी इंस्टिंक्टिवली. आपने कभी देखा है जब आपको चोट लगती है तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट बाहर आता है, आई, मम्मी, पापा, देखा ना? वैसे जब आपको कोई बोलेगा तो आपको इमीडिएटली इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट आता है क्योंकि आपको नेचर में बैठा रहता है. स्पीच पे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, अब बहुत ही डिफिकल्ट है आज के डेट में. हियर इट्स ए स्पीच. माइंड, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि माइंड को कंट्रोल करना कितना आजकल ईजी हो गया है ना, ओके, विथ थैंक्स टू मोबाइल फ़ोन. माइंड. देन एंगर. आजकल क्रोध में ही युद्ध भी हो जाते हैं 2 देशों के बीच में. क्रोध, एंगर. 4th टंग. देन बेली, देन जेनाइटल्स. इसीलिए आप लोगों ने देखा रहेगा इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज दैट टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर टंग by having a Krishna Prasad and by chanting the names of Krishna. And when you have that control over your tongue now, then you can have the balance around your belly and then you can balance around your genitals. इसलिए आप कभी दिमाग से सोचोगे तो भगवान ने जो हमारा रचना की ना, शरीर का ऐसी रचना की है. जीवा है, जीवा से जो हम खाते हैं पेट में जाता है और पेट के नीचे हमारा उदर उपस्थ है. तो तीनों चीज़ लाइन्स हैं, तो अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लोइंग है ये करके. तो यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाट यू फीड टू योर टंग. दैट इज़ व्हाट, लाइक मे बी इफ़ यू ईट वेरी स्पाइसी, पेट खराब होगा, देन यू नो कि क्या होता है फिर. ओके. एंड व्हेन यू ईट वेरी डार्क चॉकलेट्स, बोलते लोग बहुत, मुझे भी आई थिंक किसी का मैसेज आया था 3-4 दिन पहले कि प्रभु जी हम चॉकलेट्स खा सकते हैं क्या ISKCON में? बोले माता जी आपको क्रेविंग है कि कैसे? आपकी सिर्फ जनरल क्वेश्चन से. बोलते नहीं प्रभु जी बताओ, ज़रा क्वेश्चन आया है. सो उनको फिर मैंने बताया कि क्यों नहीं खा सकते. सो एक्चुअली चॉकलेट्स में क्या रहता है, इट हैज़ अ कैफीन एंड देयर इज़ अनदर सब्सटेंस नोन एज थियोब्रोमाइन एंड विच एक्ट्स एज अ नेचुरल स्टिमुलेंट. वो स्टिमुलाई होता है एंड एज एन इंटॉक्सिकेशन होता है. जब आप वो उसका कंजम्पशन करते हो, इट अराउजेस अराउंड योर सेंसेस एंड माइंड, गिविंग यू अ वेरी वाइल्ड थॉट्स and you engage into very sensual activities. इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखना, चॉकलेट के एड्स देख लो, कितने डर्टी चॉकलेट के एड्स आजकल हो गए. यू कांट इवन इमेजिन ऑफ कि खाने के लिए क्या, यूज़ कहीं और करने के लिए. दैट्स व्हाट द थिंग्स हैव बीन वेरी ग्रॉस. So when one accepts the renounced order of life, he automatically assumes the title of Swami, Goswami. इसलिए आप लोग वो टाइटल नहीं यूज़ कर सकते आज से मैं भी गोस्वामी हूँ या मैं भी स्वामी हूँ. सिर्फ जो त्याग कर देते हैं, रिनंसिएशन ले लेते हैं इस जगत से, उन्हें ही गोस्वामी बुलाया जाता है. दैट डजंट मीन कि व्हेन दे कॉल देमसेल्फ एज स्वामी, दैट डजंट मीन दे कॉल देमसेल्फ एज अ मास्टर ऑफ अ फैमिली, ऑफ अ कल्चर, ऑफ अ ट्रेडिशन और नथिंग. दे जस्ट मास्टर. Why we call them a master? Because that person has mastered his senses, hence he is called a master. Okay? So unless one is master of his senses, you can't call him a Goswami, but you can call him a Godasa, the servant of the senses. आप फिर उनको गोस्वामी कैसे बोलोगे? तो गोदास रहेगा, अपने सेंसेस के ही दास रहोगे. अब बोलोगे महेश आप इतना गोस्वामी गोस्वामी बता रहे, फिर एक्चुअली गोस्वामी है कौन फिर रियल में? सो हु इज़ इन द रियल गोस्वामी? दोज आर द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन. जो 6 गोस्वामी वृंदावन में, दे आर द ट्रू इटर्नल रियल गोस्वामीज. एंड बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ दोज गोस्वामीज, all the swamis of today's and all the goswamis of this world,
they should fully engage themselves in the transcendental loving service of the Lord. If they don't follow on the footsteps of the Goswamis of Vrindavan, then trust me, it's very difficult to engage in the loving service of the Lord. अच्छा, can anyone name who are those 6 Goswamis of the Vrindavan? आप बाद में करना, मुझे पूछने तो बाकी होगा. किसे पता है 6 गोस्वामी जो वृंदावन के हमारे प्रोमिनेंट गोस्वामीज हैं इस्कॉन के, मतलब गौड़ीय वैष्णव के परंपरा में? एक का भी नाम नहीं बता सकते आप? नहीं? अरे एक का तो बताई तो, गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज ही मैंने बताया. ओके, एनीवन, किसी को नहीं बताया? ठीक है, ओके प्रभु जी, आई गिव यू द टाइम ट्राई. श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री देव गोपाल भट्ट दास. Yes. So the 6 Goswamis of Vrindavan, it is said that Vande Rupa Sanatanau Raghuyugau Shri Jiva Gopalakau. It is, they are Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha. Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Jiva Goswami, Srila Gopal Bhatta Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, and Srila Raghunath Bhatta Goswami. These are the 6 Goswamis. आप लोग जो फ़ोन चलाते हो, आपके फ़ोन में 3G 4G 5G आ गया ना? हमारे पास 500 साल पहले 6G था. ठीक है, मॉडर्न डेज अभी थोड़ा पीछे है, बट हमारे बहुत पहले 6G है. सो दिस गोस्वामीज एक्चुअली दे आर द स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ भक्ति. ओके, दे आर कॉल्ड आचार्य. आप आजकल बहुत लोग अपने टाइटल के पीछे आचार्य स्वयं सो लगा लेते हैं, एंड दे प्रमोट द विजडम ऑफ द गीता, बट दैट इज़ नॉट द केस. आचार्य मीन्स द स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ द भक्ति, हु टीचेस अस हाउ टू कैरी आउट द भक्ति बाय देयर एग्जाम्पल्स. अब देखा भी रहेगा, कुछ लोग आते हैं, मुंह में पान रहेगा, तंबाकू रहेगा, और अपने आप को सो एंड सो टाइटल लगाते हैं. आप वही फॉलो करोगे तो बाकी आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि ये होगा. सो वी आर द स्टूडेंट. सो एंड इनफैक्ट आप लोगों ने देखा भी रहेगा, विच एवर फील्ड यू आर इन, म्यूजिक, आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, यू नीड अ टीचर टू टीच यू. विदाउट टीचर आप स्कूल में पढ़ने आते हो, आए एक दिन और टीचर ही नहीं है, तो फिर मज़ा आ गया, ब्रेक ही चलो चले जाते हैं ना, ऐसा होता है. सो टीचर नहीं हो लाइफ में तो लाइफ की हरी बोल हो जाती है. सो वी आर द स्टूडेंट ऑफ भक्ति, वी आर द स्टूडेंट वॉकिंग ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी. सो वी नीड टीचर्स, and these 6 Goswamis are our spiritual teachers, and these 6 Goswamis are the best teachers in the world because they teach us bhakti not just by their words but also by their actions. Okay, because now to speak is very easy but to follow is very difficult. मैं आज यहाँ पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के जा सकता हूँ, बट क्या मेरे आचरण व्यवहार में वो चीज़ें दिखती हैं कि नहीं दिखती, वो महत्व की बातें हैं. ओके, इसको हम समझते हैं इंस्ट्रक्टिव स्टोरी से. एक देयर वॉज अ मदर, एक मम्मी थी, उनकी एक बेटी थी, कुछ अराउंड 5-6 साल की होगी. डॉटर बहुत मीठा खाती थी, बहुत शुगर, गुड़, जैगरी कंज्यूम करती थी. तो शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, एंड वो एक दिन अपने बच्चे को लेके जाती है एक अपने गुरु के पास, टीचर के पास या मास्टर के पास. मास्टर को बताती है, आप इनको समझाइए ना कुछ. अभी हम लोग के पास भी कोई आ जाते बच्चे की, प्रभु जी बताओ ना, ये मेरी बेटी ऐसा करे वैसा करे, आप समझाओगे तो सुनेंगे. तो वैसा वो भी लेके जाती हैं उनके पास. तो वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि आप अगले हफ्ते आना. तो माँ को समझता नहीं है कि ऐसे क्यों बोल रहे गुरु. वो फिर एक हफ्ता वेट करती है, अगले हफ्ते फिर जाती है, एंड व्हेन शी गोज़ तो गुरु बोलते हैं कि क्या हुआ. बोलते हैं, अरे प्रभु जी, मैं गुरु महाराज मैं लास्ट टाइम आई थी आपको बताने के लिए, मेरी बेटी ऐसा बहुत चॉकलेट खाती, गुड़ खाती है, वैसा वैसा. बोलते हैं हाँ 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 हाँ. तो वो देखते बच्ची को और बोलते हैं, बेटा नहीं खाने का, गुड़ सेहत के लिए हानिकारक है. माँ ये बात सुन के बड़ा बिविल्डर हो जाती है. अब यही बोलना तो आप लास्ट हफ्ते क्यों नहीं बोला आपने, आप आज क्यों बोल रहे हो वैसे. तो वो उसके बिविल्डरता देखते गुरु को लगता है इनको समझा नहीं रहेगा, चमका नहीं रहेगा. मैं बताता हूँ. तो बोलते हैं कि देखो कैसा ना माता जी, मैं बच्चे को तभी डांट सकता था जब मैं वो कार्य खुद नहीं करता, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था. तो मैंने एक हफ्ता छोड़ा, रियलाइज़ किया कि नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं आज उसको डांटने का हक रखता हूँ. गेटिंग इट. सो प्रीचिंग करना बहुत ईजी है, बट क्या फॉलो करते हो क्या अपने एक्शंस पे, बहुत डिफिकल्ट है. एंड आज के डेट में बहुत ही डिफिकल्ट है you to find a teacher who follows what he preaches, who practices what he preaches. And hence the Goswamis are said to be the prime teachers of our bhakti movement, because they have
followed and practiced what they have preached. There is a saying Krishna says in the Bhagavad Gita 3rd chapter 22nd verse में यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. He says that whatever action a great man performs, common man follows, and whatever standards are set by exemplary acts, all the world pursues. Now I believe after seeing the very viral moment of Anushka and Virat Kohli, who are the very great personality today's society के लिए, if they have given up the onion and garlic, if they have given up the alcohol and all that part, and they have adopted the spiritual path, I hope that today's society they follow this thing. बट आजकल वो भी फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है. उस पर भी लोग क्रिटिसिज्म निकालते हैं, अरे क्या कर रहे हैं लोग दिखावा करने के लिए, ऐसा नाटक करने के लिए. बहुत हार्श बैक्स मिलते हैं उन्हें भी, बैकलैशेस होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आज बड़े व्यक्ति जो भी करेंगे समाज उसी का अनुकरण करता है, फॉलो करता है. एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड रिलिश्ड लिटरेचर ऑफ द गौड़िया वैष्णवा इज चैतन्य चरितामृत. किसको पता है चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? एक्सेप्ट यू. ठीक है, आप ही बोल दो अभी. कृष्णदास कविराज. यस, चैतन्य चरितामृत इज रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी. भागवतम किसने लिखा है? भगवत गीता किसने लिखी है? व्यासदेव जी ने लिखी है. ठीक है ठीक है ठीक है, वो अलग स्टोरी में जाएंगे तो फिर हमारा क्लास वैसे भी लंबा हो जाएगा. एक्चुअली पता होगा महाभारत के टाइम में बताया था मैंने कि गणेश जी ने महाभारत की रचना की है अपने ट्रंक को तोड़ के. व्यासदेव जी बोल रहे थे और कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में. ओके, दैट्स हाउ इट हैपेंड. गणेश जी ने लिखा है. एंड भागवतम वॉज composed by at a peak of spiritual maturity by Srila Vyasdev, which was later sung or spoken by Srila Shukadev Goswami to Parikshit Maharaj. Again then later it was spoken by Shaunakadi rishis at the Naimisharanya rishis. So it's a quite length. अभी चैतन्य चरितामृत याद कर लेना कि किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी. And Srila Prabhupada named the study of Chaitanya Charitamrita is a postgraduate study of the Vaishnava literatures. So basic elementary आपको पढ़ना है भगवद गीता कर लो, ग्रेजुएशन करना है श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ लो. So when Krishnadas Kaviraj Goswami, he was about to start writing this Chaitanya Charitamrita, and he was somewhere at the age of 96, 90 and above पकड़ लो. आजकल देखा रहेगा, आजकल कोई है ऐसा आपके घर में व्यक्ति, आपके पिताजी या पूज्य पिताजी या नहीं पिताजी दादाजी या परदादाजी जो 1996 के रहेंगे, 90 टच करना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, बचा ही नहीं है. तो ही वॉज समवेयर क्लोज टू 95 एंड अबाउट 96 एंड ही वॉज अप्रोच बाय द वैष्णवास इन द वृंदावन. जब वो वृंदावन में थे वहाँ के वैष्णवों ने बोला कि आप क्यों ना चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक प्रॉपर उनका बायोग्राफी लिखिए कैसे करके. तो he said that ठीक है, I'll make an attempt because even I'm not qualified. He said that because can you imagine 96-year-old person writing anything or a masterpiece, literary एकदम ये सब चीज़ें. So he goes in the Vrindavan and to every Vaishnavas and he seeks blessings कि मैं ऐसा ऐसा लिखने जा रहा हूँ, please bless me करके. So that by the blessings of Vaishnava you get empowerment. इसीलिए हम जब दंडवत करते हैं, that is the humble obeisances. By doing the दंडवत we get empowered. और ब्लेसिंग्स भी लेना बहुत ज़रूरी है. सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ही अप्रोचेज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी हु वॉज वेरी स्कॉलरली पर्सन नोन एट दैट टाइम, एंड एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी हम्बल. एंड ही सेज दैट कि ओके, एंड ही वेरी हम्बली ब्लेसेस कृष्णदास कविराज गोस्वामी एंड ही रिक्वेस्ट कि इफ यू वांट टू राइट द चैतन्य चरितामृत आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट नो वेयर मेंशन माई नेम. ही वॉज दैट हम्बल. एंड जैसे आज के डेट में अगर आज आपको नाम, नेम, फेम बहुत मिल जाए तो आप लोग बोलोगे प्रभु जी मैंने नहीं किया, मेरा नाम ऐसा बताओ ना प्रभु जी को कि मैं सेवा कर रहा था इसके. कुछ एवरीबडी इज़ डिज़ायर टू हैव दैट नेम कि किसको पसंद है कि मैं पूरा सेवा पीछे बैकेंड में करता रहा और लोगों को पता ही नहीं चले कि कभी ये प्रभु एग्जिस्ट भी करते थे. नहीं होता ना आज के डेट में, बहुत डिफिकल्ट है. तो ही वॉज, तो ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन वहाँ से आता है, व्हेन यू कैन डाइजेस्ट द नेम, फेम, एंड व्हेन यू डोंट वांट टू कम इन द मटेरियल वर्ल्ड की दिखाना भाई कि मैंने कुछ किया है करके.
दैट इज़ वॉट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी. इवन क्लास में भी थोड़ा अच्छा मार्क्स आ गया तो पूरा वो लेके घूमना ही पड़ता है कि हाँ मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया. तो फॉरगेट अबाउट दैट थिंग कमिंग इन. So agreeing to Gopal Bhatta Goswami's request, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, he wrote the Chaitanya Charitamrita, and he very precisely mentions Gopal Bhatta Goswami's name only at 2 to 3 places, उससे ज़्यादा नहीं. Then it says that Shri Gopal Bhatta एक साखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगे जार प्रेम अलापन. It says that Srila Gopal Bhatta Goswami, who is the 47th branch, was one of the great and exalted branches of the tree. He always engaged in discourses about love of Godhead in the company of Rupa Goswami and Sanatan Goswami. So Srila Gopal Bhatta Goswami, इनका जन्म होता है, किसी को पता है in which year he was born? नाम ही नहीं सुना तो पता कैसे होगा फिर. So he was born in the year 1503 AD, 15th century, 1503 AD. And he was born on the Krishna Paksha Trayodashi. Krishna Paksha Trayodashi का means है 13th day of the dark moon in the month of Pausha, to the head priest of Shri Ranganath Swami. जो श्री रंगा में श्री रंगनाथ स्वामी जी का जो पुजारी हैं, हेड प्रिस्ट, उनके घर श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म होता है. एंड उनके पिताजी का नाम होता है वेंकट भट्ट. कभी सुना था आपने ये वेंकट भट्ट का नाम? नहीं. एंड दे यूज टू स्टे एट श्रीरंग क्षेत्र, जो श्रीरंगम जहाँ है उसको बोलते हैं श्रीरंग क्षेत्र. एंड द स्मॉल विलेज है, इट इज़ नोन एज बेलगुंडी, आज भी एग्जिस्ट करता है. So after giving darshan to Raghunath Das Goswami in 1510, Chaitanya Mahaprabhu, he started his South India tour, and he travelled through the Kurma Kshetra, because you know अगर South India tour करना है, अगर वो he is coming from West Bengal and Jagannath, he started from Kurma Kshetra, which is modern day in Andhra Pradesh, then at Simhachalam, then at Mangalgiri, then at Ahobilam, जो भी हम जाने वाले हैं यात्रा में, and then to Kanchipuram, and then to Sriranga Kshetra. That is how we traveled all this to at the south. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu, he entered the Lord Ranganath temple. कोई गया है श्री रंगनाथ स्वामी का टेम्पल? मैं एक ही बार गया हूँ 2023 में, ISKCON की यात्रा था. अमेजिंग अमेजिंग, यू फील द एक्चुअली वैकुंठ वहाँ पे है. सच लार्ज, यू नो, मतलब उनका फॉर्म इतना बड़ा है, एंड वो स्लीपिंग लाइक एक्चुअली जो वैकुंठ में विष्णु सोते हैं वैसा ही एकदम एग्जैक्टली दिखेगा. सच अ मेस्मराइजिंग दर्शन, उनकी आंखें देखने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि दिख जाए बस, उनके चरण देखने के लिए विल बी सो हैंकरिंग कि दिख जाए, सच अ ह्यूज उनका ये है. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu entered the Ranganath Swami temple, he went completely ecstatically mad in the devotional mood, and he feel the presence of Vaikuntha Dham by seeing the Lord Ranganath's temple, and he engages himself and everyone in the chanting and dancing of the Lord's name, Hari Hari. By seeing Chaitanya Mahaprabhu dancing and in the ecstatic kirtan, all the inhabitants who were there at Sri Ranganath Kshetra, they started drowning completely in the pools of ecstasy. सोचो साक्षात भगवान आपके आगे नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु आके कीर्तन कर रहे हैं, तो why don't you feel the ecstasy का pool? So they were completely drowning. And हमें देख लो, look at us, when we chant and dance, we also feel the pool of sleep, laziness. एंड व्हेन वी कीर्तन कर ले तो फिर वो बॉडी पेन में क्या, नी पेन क्या, एंकल पेन क्या, फिर और पेन क्या, सब पेन ही पेन होता है, बिकॉज वी डोंट गेट द फील ऑफ एक्सटेसी ना. सच बता ना, कभी कीर्तन करते समय ऐसा लगा कि आई एम वेरी एट अ डिवोशनल हाइट एक्सटेसी. थोड़े मोमेंट के लिए भी हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए रिजुविनेट करने के लिए वो थोड़ा किक मिलता है, बट उसके बाद तो फिर रियलिटी होती है कि भाई पैर दुख रहे, भाई सच में दुख रहे हैं ना, ऐसा. So he was dancing, Chaitanya Mahaprabhu at Sri Ranganath temple, and then Venkat Bhatt, he comes, and when he appears there and he sees कि the Lord was chanting and dancing, and ऐसा नज़ारा, मतलब सोचो ना, हेड पुजारी हैं जो मंदिर में श्री रंगनाथ स्वामी की सेवा करते हैं, और वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ऐसा कौन व्यक्ति जो सबको लेके इतना नृत्य कर रहा है और इतने जोर से रंगनाथ स्वामी का नाम नहीं, लॉर्ड कृष्णा का नेम, हरि का नेम ले रहे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट. हु वाज लाइक कि कंप्लीटली अमेज्ड. देन ही रियलाइजेस कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही मस्ट बी सम एलिवेटेड सोल. सो ही क्वाइटली वेट्स, वेंकट भट्ट
when kirtan ends and everything, he approaches to Chaitanya Mahaprabhu and he says that, could you please come to my house, could you please come and pay a visit to my house. So that's how Venkat Bhatt invites Chaitanya Mahaprabhu at his house. एंड यू नो पहले वैदिक ट्रेडिशन होता था कि जब आप किसी अतिथि को बुलाते हो घर पे, या जब ऋषिगण आते थे या साधु आते हैं तो उनका सत्कार होता है, यू नो प्रॉपर एटिकेट होता है. आजकल तो बस अतिथि कब जाओगे वो कॉन्सेप्ट हो गया है. वो आ भी रहे तो फिर क्यों आ रहे हो वैसा क्वेश्चन है, और बोलेंगे कब आ रहे हो, नहीं कब जा रहे हो करके वैसा. तो बहुत आजकल का वो अलग ही लेवल चल रहा है. सो कमिंग बैक, वेंकट भट्ट ही इन्वाइट्स चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाते हैं एंड वेंकट भट्ट ही वेलकम्स हिम इन अ वेरी प्रॉपर वैदिक एटिकेट एंड ही वॉशेज हिज लोटस फीट. लॉर्ड के लोटस फीट को वॉश करते हैं. यू नो वेन यू वॉश द लॉर्ड्स लोटस फीट, आप भी लोग चरणामृत कभी पियो. चरणामृत बोलते भी क्यों हैं? क्योंकि भगवान को जो चरण स्नान किया रहता है, उनके चरणों से जो अमृत निकलता है उसको बोलते चरण अमृत. सो अभी आपने चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने वेंकट भट्ट ने लॉर्ड्स लोटस फीट ही वॉश एंड ही देन पानी जो बचा रहता है स्प्रिंकल, ही स्प्रिंकल्स टू ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स. और वेंकट भट्ट के दो और भाई थे, उनका नाम था तिरुमल भट्ट एंड प्रबोध भट्ट. कभी सुना ये वर्ड नाम? सो तिरुमल भट्ट एंड प्रबोध भट्ट. प्रबोध भट्ट लेटर बिकेम नोन एज प्रबोधानंद सरस्वती इन द चैतन्य चरितामृत के पास टाइम्स में. And Venkat Bhatt had a small child whose name was Gopal. अब हमारे हीरो की एंट्री हो रही है इस पिक्चर में. So this Gopal was also very exalted devotee, which Venkat Bhatt he got to know when Gopal was at the age of 4. उनको ना गोपाल को जब 4 वर्ष के थे तभी देख के उनको पता चला कि मेरा बेटा भी कुछ तो धुरंधर है, तो पे बड़ा. कैसे पता चला? वो एक बार जगन्नाथपुरी लेके जाते हैं दर्शन करने के लिए. The moment Gopal goes at Jagannath Puri and he stays there, the moment they enter, कोई गया जगन्नाथ पुरी? गया? Of course आप तो जाओगे ही, आप तो पुरी के हो. So when he goes there, the moment he sees the flag, the chakra, he goes mad. He rolls and rolls on the ground and chants the name of Jagannath, Jagannath, Jagannath. Venkat Bhatt gets completely surprised. मुझे इतना, मैं पुजारी हो के मुझे इतना भाव नहीं आ रहा है, मेरे 4 साल बच्चे को ही आ रहा है. देन ही रियलाइजेस कि माई चाइल्ड इज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड. एंड नाउ आफ्टर, so what happens when Venkat Bhatt washed the Lord's lotus feet, he sprinkles the water in the house. और लॉर्ड के चरण का पानी थोड़ा बचा रहता है. गोपाल कम्स, बालक है ना, उसको पता नहीं, वो पानी पूरा पी लेता है. एंड द मोमेंट ही ड्रिंक्स ही अगेन गोज वेरी मैड ecstatically. Then Venkat Bhatt understands ये दोनों इस जगत के नहीं हैं. They are the somewhere from a different world, and that's where he thinks and he decides कि अगर भगवान है, भक्त है, तो भक्त को भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए. And that's where Venkat Bhatt, his father of Gopal, he entrusts Gopal in the service of Chaitanya Mahaprabhu. सो चैतन्य महाप्रभु के पूरा 24/7 सर्विस में लगा देते, क्योंकि आपने अतिथि को घर में बुलाया तो थोड़ा 1 घंटे में तो भगाओगे नहीं, थोड़ी देर बोलोगे कि रहो, खाओ पियो जाओ. सो जब भी चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेने बैठते हैं तो गोपाल आते थे. बालक थे ना, अभी आपके भी घर में कोई देखा रहेगा, छोटा बच्चा रहता है तो कोई मेहमान आता तो थोड़ा कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं. गोपाल स्टार्टेड सर्विंग प्रसाद टू चैतन्य महाप्रभु. और जब महाप्रभु जब खा के उठते थे थोड़ा उच्चिष्ट बच जाता था, जो रेमिनेंट्स ही यूज्ड टू हैव दैट. अब जो महाप्रसाद मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, तो क्या लेवल का वो उसमें कृपा रहेगी. यहाँ मंदिर में भी महाप्रसाद मिल जाए तो हमें अलग ही लेवल का एक्सिटी होता है कि भाई मिल जाए करके. एंड देन गोपाल यूज्ड टू वॉश द क्लोथ्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु. ही यूज्ड टू मसाज हिज बॉडी व्हेन ही यूज्ड टू रेस्ट. सर दबाते थे पर जो भी सेवा करते थे. एंड लाइकवाइज Gopal Bhatt was engaged 24/7 in the service of Chaitanya Mahaprabhu. So चैतन्य महाप्रभु के साथ एक सर्वेंट भी आए थे जो उनको असिस्ट करते थे, और उनका नाम ना कहीं कहीं मेंशन किया गया कि गोविंद दास थे, कहीं कहीं मेंशन किया कृष्ण दास थे. बट फ़र्क नहीं पड़ता, दास थे और गोविंद और कृष्ण तो भगवान ही है ना, तो whoever he was. सो जब टाइम मिलता था तो उनके साथ वो बात करते थे और चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पास्ट टाइम्स के बारे में बात करते थे. तो उनके सर्वेंट थे गोविंदास या कृष्णदास, जो भी, उन्होंने पूरा चैतन्य महाप्रभु का लाइफ स्टोरी देखा था. तो बताते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही वॉज क्राइंग, एंड व्हेन लेडीज यूज्ड टू चैंट हरि हरि, then Mahaprabhu gets very smile face and stops crying. And then he says is how that Mahaprabhu used to tease the brahmanas under the waters. पूरा एकदम enchanting pastimes पूरा बताते थे. And by just hearing the narrating
these pastimes of Mahaprabhu, again Gopal Bhatta Goswami completely goes mad in long separation from Navadvip. इनफैक्ट हमारा हाल ऐसा है कि हम कितनी भी कथाएं सुन लें, ना नवद्वीप से सेपरेशन की भाव आती है ना वृंदावन से. हम तो सोचते हैं कि भाई बस कथा कभी ख़त्म होनी चाहिए. इट्स अ फैक्ट, राइट? एंड वी डोंट फील सेपरेशन बट वी फील स्लीपरेशन. ओके, वी फील स्लीपी थोड़ा सा. अभी भी देखेंगे कुछ लोग तो डोज करते रहेंगे थोड़ा बहुत कि ये होगा वैसे, बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द प्योर डिवोटीज. And by hearing the Lord's enchanting pastimes, Gopal used to think and used to, think ki why Brahma has given me birth at Sriranga Kshetra. Why didn't he allow me to take a birth in Navadvip Mayapur Dham? Then I would have been with Mahaprabhu and I would have seen his pastimes and everything. And with this thought, he used to repent, used to go mad, and used to completely meditate on Navadvip Dham. So one fine day what happens, when Gopal Bhatta, he was just lying down and taking rest, he got a dream. हमें भी सपना आता है, okay? But he didn't get a material dream. He got a dream, he got a vision where he saw all those pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, where he was acting as a Nimai Pandit in the Navadvip Dham. And when he was completely absorbed in that vision, he could see all the Panchatattvas. Nityanand Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur. And at the moment when Advaita Acharya and Nityanand Prabhu comes to close to the ears of Gopal Bhatta Goswami to speak something a secret, at that very moment Gopal gets wake up and उनके vision टूट जाते हैं या सपना टूट जाता है, ड्रीम. एट द मोमेंट अब सोचो ना, आपको ट्रॉफी मिलने वाली है और वो ट्रॉफी बस ऐसे जा रही है, कैसा लगेगा? मैं मटेरियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज आप लोग उससे रिलेट कर पाओगे. दैट वेरी मोमेंट मैंने, अच्छा ठीक है आप लोग बच्चे आपको पता चलेगा, मुझे अनाउंस किया गया है, मुझे इस क्लास पे 100 आउट ऑफ 99.99% मिल गया, आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास. ये अनाउंस हो गया, ठीक है. एक सेकंड के बाद बोला गया सॉरी वो 99.99 नहीं था, वो 0.0999 था. कैसा लगेगा? That is what actually he felt, and he felt a lot of separation from Mahaprabhu, and he immediately ran to his room where Chaitanya Mahaprabhu was sitting in the Venkat Bhatt's house. He goes there, he completely fall flat without seeing Mahaprabhu, क्योंकि उनको पता कि महाप्रभु बैठे रहेंगे क्योंकि उनके लिए अतिथि के लिए रूम है. He completely fall flat and he cries, weeps by holding the lotus feet of Mahaprabhu. And then at that time Mahaprabhu, then he wakes him up, he raise him up, ऐसा खड़ा करते हैं. And the moment he raise him up, Gopal, then he saws Mahaprabhu, he sees the Mahaprabhu's Tribhanga form of Shyam Sundar. He saws the Tribhanga form and the Lord is playing flute, and he was completely mesmerized by the darshan of Shyam Sundar. किसी ने आज या कल में फ्लावर फेस्टिवल का दर्शन किया है गोपीनाथ जी का? प्लीज़ हैव द दर्शन. अगर आप ये दर्शन करके मेस्मराइज फील करते हो ना, तो सोचो गोपाल जी ने महाप्रभु का त्रिभंग, वो भी श्याम सुंदर फॉर्म को देख के कैसे मेस्मराइज करेंगे. ये ना वर्ड्स में बयान करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक्चुअली वो फीलिंग क्या होगी करके, बट सिंस वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. आफ्टर दिस Chaitanya Mahaprabhu takes Gopal and makes him sit on his lap, and Chaitanya Mahaprabhu pours the tears of ecstasy, and Gopal also cries the tears of ecstasy, and in this way they both completely gets wet, their clothes, everything in the tears of ecstasy. And after a while when they get together everything, then Chaitanya Mahaprabhu says that don't ever tell about this form, that whatever you have seen, and he again changes his form back to Gauranga. So like this चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे 4 महीना रहते हैं, क्योंकि वो जब गए रहते साउथ इंडिया टूर में तभी चातुर्मास था, रेनी सीजन. तो रेनी सीजन में देखा रहेगा साधु सन्यासी कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं, दे यूज्ड टू सिट एट अ वन प्लेस. And when he was there at Venkat Bhatt's home at house, Chaitanya Mahaprabhu used to had a very friendly conversations with Venkat Bhatt. अब देखो आप लोग वैष्णविज्म आप इनको भी बोल सकते हो जो साउथ इंडिया में भी फॉलो करते हैं. हम गौड़िया वैष्णव है जहाँ पे कृष्ण को प्रधान दिया गया है, टॉप मोस्ट माना गया है. दे आर द वैष्णवास, दे थिंक विष्णु इज द टॉप मोस्ट. तो अब कृष्ण ऊपर है या विष्णु ऊपर है, ये चीज़ में लोगों की लड़ाई आज भी होती रहती है. That was the same thing when Chaitanya Mahaprabhu went to South India tour. When he met with Venkat Bhatt, he used to had that same conversation with
Venkat Bhatt, ki the identity of Lakshmi Narayan and Radha Krishna, and very frivolously, jokingly, teasingly, he used to play with the words with Venkat Bhatt ki look at your Lakshmi, he is doing tapasya in Belavan and he could not get entry into the Ras Leela. Then to which Venkat Bhatt bolenge na kare aap aise kaise bol sakte ho. Then Venkat Bhatt used to reply and everything. So there's a lot of conversations hota hai where Venkat Bhatt says that Lord Narayan, Lord Vishnu is the supreme, sare incarnations usse aate hain. Then later point in time, Chaitanya Mahaprabhu gives him proper Bhakti Shastrika knowledge. And then he makes him understand, and that's where Venkat Bhatt accepted the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Unki family bhi accept karti, and they started following the Gaudiya Vaishnava principles. So Lord Chaitanya Mahaprabhu का वो यात्रा खत्म होने रहता है, and he started moving towards other tour के लिए, and he stayed for almost 4 months. और 4 months जब चातुर्मास एंड होता है तो कार्तिक मास लगता है, तो when he was leaving कार्तिक मास में he initiates the Gopal, initiation देते हैं उन्हें, and then he starts कि अब मैं चलता हूँ. Then on the request of Gopal बोलते हैं कि प्रभु जी महाप्रभु प्लीज रुक जाओ और 10-15 दिन करके, and that on that request Mahaprabhu stays for another 15 days. And then at that time Chaitanya Mahaprabhu speaks, or rather instructs to Venkat Bhatt. He says that your son is a very special child, so don't involve him in this worldly affairs, because once you both leave this world, something. So he says that once you leave, you and your wife leaves this world, then you ask him to come to Vrindavan and serve there in the association of Rupa Goswami and Sanatana Goswami, because this boy has to do a lot of service to the mankind. प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन. By this mood, Gopal was praying to Chaitanya Mahaprabhu, please don't leave me here, please take me along with you, I don't want to live without you. Then he makes Gopal understands, look, you are just a small child and you have a father and a mother to take care of, you just serve him अच्छे से, वैष्णव है वो भी, सेवा करो, जब वो इस जगत से चले जाएंगे तब आप वृंदावन आ जाना. So later Chaitanya Mahaprabhu goes, and Gopal Bhatta Goswami got trained under his uncle, जो उनके 2 भाई थे, तिरुमल भट्ट and Prabodha Bhatta. Prabodha Bhatta was later known as Prabodhanand Saraswati. So Prabodhanand Saraswati was his elder uncle, I think, and he teaches him lot of Bhakti Shastri, right from Vyakaran, rhetoric, grammar, poetry, and he becomes a very topmost scholar person in the Vedanta. And though Chaitanya Mahaprabhu had left already Shriranga Kshetra, but he used to always think of Chaitanya Mahaprabhu. Like, you know, अब कैसे think करते हैं, मैं अगेन एनालॉजी देता हूँ. You know, when a lover, when a boyfriend and a girlfriend, or a husband and a wife, when they think of each other and when they're separated from each other at a long distance, how longingly they desire to meet. That was exactly विरह का जो भाव रहता है ना, that is what actually Gopal Bhatta Goswami was feeling when he was away from Chaitanya Mahaprabhu. Then times moves like this, and जब उनके माता पिता का देहांत होने वाला रहता है, कुछ दिन पहले उनके माता पिता बुलाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि आप एक काम कीजिए, जैसे हम इस जगत से चले जाएंगे आप वृंदावन के लिए प्रस्थान कीजिएगा, और जैसे महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के एसोसिएशन में आप उनको सर्व कीजिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए. एंड हिज पेरेंट्स देन पास्ड अवे, and that's where he thinks to leave to Vrindavan. Now again, Gopal Bhatta Goswami had 2 options. या तो वो सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते थे जो उस समय जगन्नाथ में थे, या तो वो सीधा वृंदावन जा सकते थे. तो उन्हें क्या करना चाहिए था? जगन्नाथ महाप्रभु जो जिनसे मेरा विरह का भाव था वहाँ जाना चाहिए था, या मुझे वृंदावन पहले जाना चाहिए था कि पहले महाप्रभु से मिल लेता, हालचाल ले लेता कि महाप्रभु मैं जा रहा हूँ वृंदावन, वैसा करना चाहिए था? आप लोग सोचो क्या करना चाहिए था उन्हें? वृंदावन, महाप्रभु से बढ़ के वृंदावन है, महाप्रभु से मिलना नहीं चाहिए उनको. गुरु का जो ऑर्डर्स होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए सबसे पहले. एक्चुअली करेक्ट, इसलिए बोला गोस्वामीज दे प्रीच थ्रू देयर एक्शंस, दे प्रीच व्हाट दे प्रैक्टिस, एंड दिस वी कैन अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वाणी सेवा एंड वपु सेवा. वपु सेवा मीन्स सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू बॉडीली, through association, physical service. Vani Seva means to serve the spiritual master through his instructions, words, teachings. Even in fact,
Srila Gopal Bhatta Goswami taught these examples how it's important to follow Guru's instructions, and same we can see today also. Why ISKCON exists, why you guys are here today, all because of doing the Vani Seva. Our beloved Srila Prabhupada, he followed the instructions of his spiritual master Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Just following his instructions that you go in the West and preach in English language, that's where the ISKCON is there today. Similarly, if you see when Srila Prabhupada was there on this material planet Earth or this Bhuloka, his disciples followed the same thing. None of the disciples said कि Prabhupada मुझे आपके पास रह के आपकी सेवा करना है. Prabhupada बोले ये instruction, they used to go and then serve without even seeing the Srila Prabhupada or having that personal association. And even the present day Maharaj or sannyasis what we have, right from His Holiness Radhanath Swami Maharaj, His Holiness Indradunna Swami Maharaj, you can name many, they hardly get that physical association to be with Prabhupada, and that is where today we have ISKCON as a foundation. One time the disciples of Srila Prabhupada, they asked Srila Prabhupada that Prabhupada, why don't you visit to the Samadhi of your Guru Maharaj? So Prabhupada told them that my god brothers, they think that my Guru Maharaj is not there, and that's why they think I should go and visit the Samadhi. But you know what? I always found my spiritual master Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur always beside me. I never feel separated from him. I'm always in unite with him. Why? Because I'm following the instructions of my spiritual master. That's very much important. So you preach. When you preach, you have to practice also what you preach. So likewise, Gopal Bhatta Goswami, he goes to Vrindavan and not to Jagannath Puri to meet Mahaprabhu at the age of 30. And at that time, जब वो वृंदावन जाते हैं पहुँचते हैं, तो at that time Rupa Goswami, he was making some messages to send to Chaitanya Mahaprabhu कि Gopal Bhatta Goswami आ गए करके. And at the same time at Jagannath Puri at Tota Gopinath, where Chaitanya Mahaprabhu and his associates were there, they were also thinking कि गोपाल वृंदावन पहुँचे रहेंगे कि नहीं पहुँचे रहेंगे और कैसा क्या रहेगा. And at the very same time the messenger arrives with the message of Srila Rupa Goswami that Gopal has now reached to his destination, Vrindavan. Now Chaitanya Mahaprabhu, when he hears this message, he finds himself in a very ecstatic joy, seeing that Gopal has reached his ultimate destination. Can someone say what was Gopal Bhatta Goswami's ultimate destination? Where he reached? Vrindavan. और कोई बता सकता है? महाप्रभु ने पहले क्या इंस्ट्रक्शंस दिया था उन्हें? Yes, the ultimate destination of a Vaishnava is not the holy places. You can go and reside in a holy places. What if the holy places is without Vaishnava? What will you do then? The ultimate destination for a Vaishnava is the association of devotees. That is what the ultimate destination is. Similarly, अपना भी destination वही है कि so that we can come together, be together and serve in the service of the Lord. So Lord Chaitanya Mahaprabhu was very pleased by hearing that Gopal has reached Vrindavan and he is under the association of Rupa and Sanatan. So he sends some transcendental gifts. अब हम क्या भेज सकते हैं आजकल? मटेरियली गिफ्ट्स भेजेंगे ना, बट महाप्रभु he sends transcendental gifts. He sends popins, shawls and a wooden plank. A wooden plank you can बोल सकते चौकी रहती जहाँ पे महाप्रभु बैठते थे. And then in Vrindavan, Gopal Bhatta Goswami at that time, he also accepts the sannyas order and he wears the sannyasi Babaji type of dress and everything. And when this gift reached Vrindavan, seeing the prasad, because anything that is connected with the Lord is a prasad, is a mercy. So by seeing this prasad of Chaitanya Mahaprabhu, again Gopal Bhatta Goswami went in deep ecstasy and he accepts the prasad, the transcendental gifts very wholeheartedly. And so like this way Gopal Bhatta Goswami used to live in Vrindavan. He used to pass his nights at various kund chanting the holy name of Lord Krishna, what we are chanting today. And during the day he would deeply absorb himself in the reading of the Bhakti Shastra literature, scriptures, and he used to compile them, write them under the guidance of Rupa and Sanatan. And gradually Rupa Goswami involves him in worshipping the Radha Govind Dev Ji.
So he would do bhajan at various places, and very importantly he would do bhajan at a very important place under the cave. There is a place in Sanket, वहाँ पे वो गुफाओं के अंदर जाके वो भजन करते थे. सो दिस संकेत, दिस प्लेस इज बिटवीन नंदगांव एंड बरसाना. वाई गोपाल भट्ट गोस्वामी वुड पर्पसली चूज दैट प्लेस टू डू द भजन? अगेन, जो आचार्यगण करते ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, एक साइंस होता है. देयर हैज़ टू बी सम रीजनिंग जो हमारे मटेरियल मंडेन लॉजिक से समझ नहीं आ सकता है. So he chose that place to do bhajan. Why? Because it was a common place between Nandagaon and Barsana, and that place was where the gopis would assemble and they would communicate with the devotees of Nandagaon and Barsana to give them the signals ki what will be the pastime of today we will play of the Lord, and how we will decorate or do the seva for the Lord. And that's how they used to telecommunicate, telepathy or telecommunication. So in fact telecommunication भी word 500 years back, 5000 years back discover हुआ था. So there is also very beautiful place at Sanket Dham, and the temple is known as Sanket Bihari Ji, and there is a feminine deity that is known as Sanket Devi. So like Gopal Bhatta Goswami, who was absorbed in the service of Rupa and Sanatan, he started developing the symptoms of love of Godhead. इसलिए ना, we let you engage in the service. The more you serve the Vaishnavas, now you become humble and you develop that love of affection towards the Lord. So it is said that in Srimad Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, 16th verse, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्. So when one engages oneself in the service of the Lord and his devotees, that is when he realizes the transcendental knowledge. And when you realize the transcendental knowledge, then you can digest that transcendental knowledge. So gradually some days passed like this, and various years passed by, and then they got a sad news that Chaitanya Mahaprabhu has disappeared from this world, and again they felt a very long separation from Mahaprabhu. And again Gopal Bhatta Goswami has seen like a child when he was there at Mahaprabhu. Again he felt a long separation, and one fine day Gopal Bhatta Goswami was sleeping, and in that dream Chaitanya Mahaprabhu appears and he says that soon I will give you my darshan, and he asks them that you go to Kali Gandaki river near Damodar Kund, which is in Nepal, and you will find my beautiful form. Hearing this, immediately Gopal Bhatta Goswami, after seeking the permission of Rupa Goswami and Sanatan Goswami, he started walking from Vrindavan through Haridwar to Nepal. अब वृंदावन यहाँ पे, तो हरिद्वार कैसे आप नेपाल जाओगे? So when he reached Haridwar, somewhere in the area of Saharanpur, he reached in a village known as Devbandya, which is modern day आप गूगल करोगे, it is known as Devband. देवबंद के नाम से जाना जाता है. And when he reached there, it was afternoon time. It was a very sandy storm. आता है बहुत रेत and all that part. So he was so much troubled. And by seeing Gopal Bhatta Goswami in trouble, there was one Brahmana. He sees that कि there is some Vaishnava who is in trouble. He says that कि आप यहाँ पे आ जाइए मेरे घर में, थोड़ा आप सेवा रेस्ट लीजिए, then you go and then continue with the journey. And the name of that Brahmana was Madhav Prasad Sharma. याद रखना ये नाम, लास्ट में हमें लिंक करना है. So he invited Gopal at his house. He serves the Gopal, and while having some conversation, Madhav Prasad Sharma, he feels very much excited. देखो जो शुद्ध भक्त रहता है ना, उनके यहाँ से आप लोग को एसोसिएशन में एक पॉजिटिविटी मिलती है कि भाई इसमें ज़रूर कुछ बात है, ये भक्ति ज़्यादा कर रहा है, नाम जाप ज़्यादा कर रहा है, शास्त्रिक नॉलेज है. यू फील दैट वाइब. सो इवन दैट माधव प्रसाद शर्मा फेल्ट दैट वाइब, एंड ही सेज दैट कि वी डोंट हैव अ सन. मैं और मेरी पत्नी, हमें संतान नहीं है. अगर आप कुछ दे सकते हो हमारे सर्विस के बदले, या एक ब्लेसिंग मांगना चाहें, तो आप सिर्फ हमें एक ब्लेसिंग दीजिए कि हमें एक पुत्र हो. और मैं वचन देता हूँ कि हमारी जो पुत्र होंगे, हमारी जो संतान होगी, आजीवन उस संतान को आपके सेवा में लगा दूंगा. इटर्निटी तक, लाइफ टाइम के लिए वो सन आपका सेवा करेगा. बाय हियरिंग दिस, गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्लेसेस, एंड देन ही मूव्स हिज जर्नी टू द कली गंडकी.
and he reaches to the Damodar Kund at Kaligandaki river, and he takes bath, and he sees at the banks of the Ganges, कि जहाँ पे Ganges बोल रहा हूँ, the Kaligandaki river, he sees कि where could I find the Lord Chaitanya Mahaprabhu's form, but he could not find anything, and like this many days passed. Again he is weeping and crying, longing separation. महाप्रभु अब कहाँ हो, कुछ दिख नहीं रहा है कैसे. Then he says that कि I'll fast until my death, जब तक मेरी मृत्यु नहीं तब तक मैं फास्ट करूँगा. And like this what he says, why he says so, because he says that what would be the existence of my life, अगर मैं महाप्रभु के ही लाइफ को इन फॉर्म को पा पाऊँ तो ये लाइफ का मेरे जीवन का व्यर्थ क्या ही उपयोग है करके. And when he was crying at the banks of the Kaligandaki, his tears merged in the river of Kaligandaki. So when you go such places ना, बड़े बड़े तपस्वियों ने ना स्नान किया है, उन्होंने आश्रु बहाए हैं. Even Advaita Acharya, when he wanted to call Mahaprabhu, he prayed to Shaligram by offering the tears of love, Tulsi Jal Dal Matrena. So धाम ऑलरेडी पवित्र हो चुके हैं, नदियाँ बहुत ही पवित्र है, बिकॉज उसमें बड़े बड़े भक्तों का उसमें तपस्या मिश्रित है, और whatever you can call it as the love and everything. So finally again Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in his dream, and he says that I will soon bless you with my form. And so he started offering the arghya in the Kaligandaki river, and he used to stand there under the sun and used to offer the arghya hours and hours. And when he went down to take the water up in his palms, he found in an amazement one shaligram. He thinks that ठीक है आ गए रहेंगे shaligram. So he goes again back, he drops the shaligram, again he comes back and takes the water, again he sees the same shaligram. So he doesn't understand, he gets bewildered. Then at that time he remembers कि Lord Chaitanya Mahaprabhu ने क्या बोला है, कि he told them that कि in the dream that the very first Srila that you will have in your hand, which will be my form. And then he recognizes that this Srila is none other than Chaitanya Mahaprabhu's form. And likewise he discovers 11 more Shrilas. So total there were 12 Srila उनके पास रहती है, and collects all that 12 Srila. And first जो शिला रहती है वो दामोदर शिला रहती है, and he collects that and again comes back to the Vrindavan, and he started worshipping the महाप्रभु के फॉर्म को. देखा रहेगा गोवर्धन शिला कैसी होती है, उनको कुछ नहीं है, फॉर्म नहीं रहता है, नॉर्मल एक पत्थर जैसा पाषाण रहता है, and then you worship that. गोवर्धन पूजा में देखो हम कैसे डेकोरेट करते करके उन्हें. So he started worshipping the Shila as a Nitya Seva every day, and then while doing that worship he could see that all the Goswamis have very beautiful deities. Rupa Goswami has, does anyone know Rupa Goswami has which deity? उनके इष्ट देव कौन है? नहीं? अपने थाने के मंदिर का नाम क्या है? थाने में जो ISKCON है वहाँ के डीटीज का नाम क्या है? नो आइडिया. हरी बोल. श्री गोविंद देव, श्री राधा गोविंद देव. So Rupa Goswami has Radha Govind Dev's deity, and which was excavated. अगर ये पास से पता होगा राधा गोविंद देव जी कैसे मिले थे. गोविंद देव जी यमुना के गुफा के इसमें there was a hole, it was excavated from the hole where एक गाय आके दूध देती थी रोज, and that's where they found कि there is a Govind Dev. Then he sees Jiva Goswami, he has Radha Damodar, which was personally carved by Rupa Goswami, so he was worshipping that. And Sanatan Goswami, again does anyone know Sanatan Goswami के इष्ट देव कौन है जिन्हें वो वर्शिप करते थे? नहीं. देखो बहुत अच्छे नोट्स बनाओ. Sanatan Goswami had Shri Radha Madan Mohan. So this Radha Madan Mohan originally is Madan Gopal, Advaita Acharya के बाद में जो इन्हें मिलता है, and that's where it is known as Shri Radha Madan Mohan. अगर वो भी एक अलग डिवाइन पास टाइम है. So यूज टू कॉन्टम्पलेट कि सभी गोस्वामीज के पास इतने सुंदर विग्रह हैं और मेरे पास सिर्फ शिलाएँ हैं, मैं इनको सेवा कैसे करूँ, इन्हें कैसे क्या करूँ करके. आई डोंट हैव अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड आई हैव जस्ट अ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर. एंड इंसिडेंटली क्या होता है जब ऐसे विचार करते रहते हैं, एक वेल्दी मर्चेंट रहता है, बहुत ही बोलते हैं ना एकदम वेल्दी मर्चेंट का. आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इन हिंदी. वेल्दी मतलब अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी. हाँ, एक अमीर व्यापारी रहता है वो वहाँ से, सॉरी मेरा हिंदी सोचना पड़ता है मुझे. सो वेल्दी मर्चेंट ही कम्स देयर एंड ही सीज दैट एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स अ वेरी रिच क्लोथ्स. ओके, वेरी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग. पहले के जो व्यापारी वो करते थे ना, मर्चेंट्स ऑफ द किंग, दे यूज्ड टू डोनेट लाइक एनीथिंग टू द सेजेस. सो ही गिव्स लॉट ऑफ थिंग्स टू द अदर गोस्वामीज. एंड व्हेन ही कम्स टू श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी,
he sees कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हैज शीलास, एंड बाय जस्ट सीइंग दैट एटीट्यूड बहुत कुछ बोलता है, यू नो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. He saw the simplicity and humility of Gopal Bhatta Goswami, and he was amazed, and he offers lot of clothes and gold ornaments. By seeing this, then Gopal Bhatta Goswami says to that merchant, what will I do with these ornaments? What will I do with these clothes? I don't have a form structure of any deity form. Like how would I make my deity Sheela decorate with this ornament? अब शीला को आप कैसे कान का वो पहनाओगे, नथनी कैसे लगाओगे, आप बाकी सब डेकोरेट कैसे करोगे ना. तो ही वॉज लाइक दैट अमेज्ड. एंड देन हियरिंग दिस मर्चेंट सेज, no worries, you will soon have someday, and you never know how may you use these things in the service of the Lord. So Gopal Bhatta Goswami says, ठीक है, I'll keep this then. And like this again some days passed, and it was वैशाख चतुर्दशी. You know वैशाख चतुर्दशी में क्या हुआ था, किसी को याद है? सो वैशाख चतुर्दशी, अभी वो लास्ट में हमारा ये क्लास होता है ना न्यू ईयर पे, कैलेंडर जैन फेब मार्च, हम कैसे कैलकुलेट करते? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़. चैत्र इज मार्च, अप्रैल में आ जाता है अपना वैशाख, अप्रैल में आ जाता है अपना चतुर्दशी, मतलब 14th डे, द अपीयरेंस ऑफ नरसिम्हा देव. अब आई थिंक 30th April या सम अप्रैल वी आर सेलिब्रेटिंग द नरसिम्हा चतुर्दशी. So it was Vaishak Chaturdashi and the day of Narsimha, appearance of Narsimha Bhagwan, and entire Braj was busy with decoration, all that celebrations. And in the evening also Gopal Bhatta Goswami offers the bhoga to his shaligram, and he offers the bhoga, and again he had the same thought of separation, ki how would I worship and everything. And he thinks that कि if on the prayers of Prahlad, Lord Nrsimhadev can appear from a stone like a pillar, then can't Mahaprabhu appear from this stone like a shaligram? And with this thought, he offers the bhoga, he cries, weeps, and a lot of that meditative mind, he sleeps there. And when he sleeps there, in that deep absorption, again Chaitanya Mahaprabhu appears, and he says that, don't worry, you will soon have my form. And then again he thought कि I'll have a vision something. And the moment he wakes up and he goes, takes a bath करके स्नान करके जब आते हैं, और बास्केट में रखे रहते सारे 12 शालिग्रामों को. When he opens the basket and he sees एक शालिग्राम missing है. There are 11 शालिग्राम, and instead of that one, वो शालिग्राम दामोदर शिला ही missing थी. Then he sees that instead of that Damodar Shila, there was a nice beautiful form of Tribhanga Krishna, same form which he saw in the childhood pastime, man. And the moment he saw that Tribhanga form, he was mesmerized, he was just captivated by the eyes, the feet, the nails, the lotus like teeth and everything. वो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, एंड बाय द मोमेंट द न्यूज स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर इन द व्रज कि लॉर्ड हैज अपीयर्ड फ्रॉम द दामोदर शीला ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी. By hearing this news, all the Goswamis, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Lokanath Goswami, Bhugarbha Goswami, all the biggest scholars of Vrindavan at that time, they gathers. भगवान प्रकट हुए हैं, नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए, जो स्टोन में सुना था हमने, आज साक्षात भगवान प्रकट हुए. दे कम एवरीबडी, एंड एग्जैक्टली वो सेलिब्रेशन का पूरा माहौल हो जाता है. एवरीवन कम्स एंड दे जस्ट सी द ऑ दर्शन ऑफ लॉर्ड. So what happens then? I'll use this verse. संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम यही 3 अर्थ सर्व सूत्रे प्रयवसाना. इट मीन्स दैट जो रूप गोस्वामी के डीटी है ना, राधा गोविंद देव, और जो मदन मोहन जी है, सनातन गोस्वामी जी, ये ना कुछ रेफर करते हैं, इनका कुछ मीनिंग है. So Radha Madan Mohan is referred to as Sambandha Vigraha, and Sanatan Goswami is our Sambandha Acharya. When I say Sambandha, when you worship Madan Mohan, when you worship or take the shelter of Sanatan Goswami, they will help you to establish your lost relationship with the Lord. इसलिए मदन मोहन जी बहुत ही एकदम, उनका रूप देखोगे ना एकदम mesmerizing है. And hence when you go and pray na, just pray that कि please Madan Mohan ji, help me establish my lost relationship with you. And Radha Govind Dev ji, he referred to as a Abhideha Vigraha, and Rupa Goswami is a Abhideha Acharya.
Abhideya means the process of Abhideya, of engaging oneself in the process of devotional service. And Prayojan means the ultimate epitome of the culmination of everything, what we are doing in bhakti, that is developing the love of for the Godhead. बताओ किससे प्रेम है भगवान कृष्ण से? किससे इतना प्रेम है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप कर सकते हो? नहीं है वह प्रेम। माला जप में किसको प्रेम आता है? कभी टेस्ट आया लव का, वो सेपरेशन का नहीं आया है। So we are just practicing this, and when we practice this now, what we will achieve is the Krishna Prema, the love of the Godhead. And the Prayojan, the Vigraha, is none other than our beloved of Chowpatty, is Sri Radha Gopinath ji. And the deity of Sri Radha Gopinath ji was worshipped by Srila Raghunath Das Goswami. So all the Goswamis and Brajvasis, they assembled there and they were just looking at the features of the Lord. And so they found that जो deity प्रकट हुई थी दामोदर शिला से, they found that the Lord's lotus feet were exactly similar to that of Radha Madan Mohan ji. आश्चर्य है. And the face of the Lord was very similar to the Radha Govind Dev ji. And the chest and the lower part of the Lord was exactly similar to that Radha Gopinath ji. When they saw that, त्रिभंग मतलब क्या, तीन जगह से टेढ़े तो हैं ही हैं और बाकी तीनों फॉर्म भी तीन अलग अलग डिटीज का एक में दर्शन मिल रहा है. So by seeing that, they were just completely absorbed in the deep meditation. And you know what? Where Gopal Bhatta Goswami had kept that basket of shaligram, he kept that underneath the peepal tree. And they said that Goswamis and the Brajvasis, they started, discussing the Krishna's pastime. In fact, that peepal tree has a very important significance in Krishna's pastime. So what happened? During Ras Leela, Krishna ran away in between that Ras Leela. And when he ran away, it was happened that it was the same peepal tree 400 and 5,000 years ago. And they were discussing all this thing. And Srimati Radharani was running here and there in the search of Krishna, calling out his name as Ramana, Ramana, Ramana. And so the Goswamis were reminded of this pastimes of Krishna and they named this deity as Radha Ramana. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. 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 So that's how the Radha Raman जो आज हम दर्शन लेते हैं झांकी, आज वैसे ही उनका प्राकट्य हुआ था. So when on the day of Vaishak Purnima, because he was appeared on the Chaturdashi, the next day Purnima was there, and so Gopal Bhatta Goswami, he ignited the fire and everything was offered to him. In fact, राधा रमन जी का अभिषेक हुआ तब 500 लीटर दूध के साथ, सोचो. एंड द गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उन्होंने वो आग लगाई थी इन द सेंस व्हेन इग्नाइटेड, इसलिए हिंदी खराब है मेरी, व्हेन इग्नाइटेड दैट फायर द फायर इज स्टिल बर्निंग टुडे. सो इन फैक्ट व्हेन यू go to Radha Raman temple, the offering that is done by the fire that was ignited by Srila Gopal Bhatta Goswami 500 years back. That is what the power of the prayers. And that's how it happened. And so actually दो ही deities है, राधा रमन जी और वृंदा देवी, दो deities है जो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए. They never left Vrindavan. All the deities were transported to Jaipur because of the attacks of the Mughals and everything. So likewise, Gopal Bhatta Goswami was absorbed in the meditation by looking at the beautiful form of the Radha. आज भी जाके राधा रमन जी के दर्शन करो, कितने beautiful form है करके हैं. And like this 10 years almost passed, and one fine day when he was returning from taking a bath, and he saw that यमुना से बात करके ऐसे आ रहे थे स्नान करके, and he saw there was a one person, a small kid, maybe a mature child. He came there, and as soon as that child saw Gopal Bhatta Goswami, he fell flat and offered the Dandvat. And Gopal Bhatta Goswami asks that, who are you करके. कोई बता सकता है वो child कौन हो सकता है? Good. That's the power of attentive hearing. The boy says, my name is Gopinath Sharma. Then he reveals his identity, how you were there during your yatra and you made my father, and I'm none other than just a blessing. What you give to my father, I'm here. And that's how he accepts the child as his disciple. And Gopal Bhatta Goswami then says that he go back
and get married and continue the parampara legacy of worship and everything. So then Gopinath Sharma, he cries and he says that Guru Maharaj, I can accept any instructions of yours, but don't let me drown in this material world of marriage. मुझे नहीं फंसना है, भौतिक जगत में ये गृहस्थ बनना नहीं है. And don't let me go away, because if I get married then I have to go away from my spiritual master. So don't let me do that. I am ready to die on your instructions, but don't let me do that. सेम चीज़ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जब छोटे थे चैतन्य महाप्रभु आए थे तब उन्होंने बोला था कि डोंट प्लीज़ लेट मी गो. एंड द सेम इंस्ट्रक्शन वाज गिवन दैट डोंट, उनके फादर को भी ये इंस्ट्रक्शन महाप्रभु ने दिया कि डोंट लेट हिम एंटैगल इन द मटेरियल वर्ल्डली अफेयर्स. देन ही गॉट रिमाइंडेड ऑफ द सेम थिंग एंड ही सेज कि ठीक है. और गोपीनाथ शर्मा के एक भाई थे जिनका नाम था दामोदर शर्मा. दामोदर शर्मा एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड ही गेट्स मैरिड. एंड ही उनके ही लीनिएज, जो आज आप पुंडरीक गोस्वामी जी को जानते हो, पुंडरीक गोस्वामी सेंसेशनल फिगर इन द उन्हीं की लीनियज जो राधा रमन जी की सेवा करती हैं, उनकी और उनकी वाइफ है. उनकी वाइफ का भी माता जी का नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है, गोल करें ना. पुंडरीक गोस्वामी जो उनकी लीनियज जो आज देख रहे हो ना, उन्हीं की लीनियज है, दामोदर शर्मा जी के. So likewise, this Gopal Bhatta Goswami was involved in the service of Radha Raman ji in the association of Rupa and Sanatan, and he spent 45 years in Vrindavan. So when he came in Vrindavan, at what age? His parents passed away at the age of 30, and he spent another 45 years. So he spent almost 75 years of life in this planet Earth on the material creation. And during this period, he did a lot of things. I'll just sum it up. He was occupied in compiling scriptures. He wrote Hari Bhakti Vilas, and which Sanatan Goswami later compiled this out of love and care for Gopal Bhatta Goswami, and he mentions his name in Hari Bhakti Vilas. He wrote Shat Sandarbhas, which was compiled later by Jiva Goswami. He also wrote Satkriya Sara Deepika, which was about samskaras. He wrote a commentary on Krishna Karna Amrita, which is called as later Shri Krishna Vallabha. So Srila Jiva Goswami mentions at the introduction of Shat Sandarbhas, Srila Jiva Goswami na Prabhupada says there was only two scholarly person appeared in this world. Ek my spiritual master and ek Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami writes in that the introduction of Sat Sandarbhas, he says that a devotee from South India who was born of a Brahman family, and he was very intimate friend of Rupa and Sanatan Goswami, and has written a book that he has not compiled, not very systematically. Therefore, I, the tiny living entity called Jiva, am trying to assort the book systematically, consulting the directions of great personalities like Madhva, Sridhar Swami and Ramanuja Acharya. So जो उन्होंने उनको इतना दिया कि how scholarly the Gopal Bhatta Goswami was there. So really he was very scholarly person. And you can't imagine, और inconceivable है, आज का material knowledge आपको एक टॉप लेवल का डिग्री हासिल करवा सकता है, एक बेटर जॉब हासिल करवा सकता है, बट टू अचीव द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज इनकंसीवेबल. यू कांट. आई ऑफर दैट टू यू एज अ रिक्वेस्ट, प्लीज गो अहेड एंड स्टडी द लिटरेचर्स. नहीं समझ में आएगा. दे वर दैट स्कॉलरली पीपल. And he spent almost 75 years in this world, and then he departs from this material world, Gopal Bhatta Goswami. So this was the entire journey of Srila Gopal Bhatta Goswami. I know बहुत बड़ा था class, almost 1 hour हो गया रहेगा शायद से, because even I was preparing, I thought of the same thing. To help you understand, I summarized this class with an acronym, Heartfelt Journey. So the heart of that H stands for humility. अब समझते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में कैसे ह्यूमिलिटी थी. फर्स्ट, ही वॉज बेस्ट बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, वेर he spent, when Chaitanya Mahaprabhu spent the 4 months, despite Gopal Bhatta Goswami was very rich, wealthy background, he doesn't show his scholarship but selfless devotion and service. Being so humble, when Krishnadas Kaviraj Goswami came, he was composing the Chaitanya Charitamrita. He said that don't reveal my name, and he blessed him. So how humble he could be. Humble servant of Shri Shri Radha Raman ji, unmoved by material qualities, despite his high birth, knowledge and renunciation, he remained free from pride and was filled with love of devotion. That is what his humility is. Then the E of heart is empowerment. You know, to do anything in this world, you need the empowerment.
and he was empowered directly by Lord Chaitanya Mahaprabhu when he was a child, and by his instructions. That was the foundational principle of spiritual empowerment. Then on the instructions of how again he empowered by receiving the transcendental gifts of Chaitanya Mahaprabhu. You get that Prasad, Mahaprasad. He again got empowered by worshipping the Lord Chaitanya's direct form, Shri Radha Ramanji. That's how the empowerment is. He again got empowered from the instructions of Mahaprabhu to go to Vrindavan and be in the association of Rupa and Sanatan Goswami. Then the A of that heart stands for affection. He has that deep affection for Lord Chaitanya Mahaprabhu. The 4 months, इसलिए the spiritual alchemist touch, चैतन्य महाप्रभु का जो alchemist वाला जो touch था, वो जो time spend किया था, वही completely change कर दिया उनका जीवन चरित्र गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का. And that's where he developed the deep affection for Mahaprabhu, and that's where he had an affection of separation, a feeling of longing separation when he got separated from Mahaprabhu at different stages. He cried in separation from Mahaprabhu, and then he cried, he spent that tears in Gandaki river where he found the Damodar Shila. And then again, after founding that Damodar Shila, he cried in that separation, having that love and affection that I could worship this Shila in the form of a deity, and that's where Radha Ramanji came. Then the R of heart is revelation. Revelation of Lord Chaitanya's pastimes. When he was a child, when he was dreaming, Lord Chaitanya Mahaprabhu revealed the entire pastimes. नित्य लीला उनका सारा उन्होंने बताया कैसे वो निमाई बन के पास टाइम करते. That was the revelation. Then dream vision at Sri Rangam when Lord Advaita Acharya Nityanand Prabhu came to speak something, and then again this dream got broke. Then again Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, revealed himself in the Tribhanga form when he ran towards him. And again the divine instructions was a revelation at Radha Kund, Damodar Kund, that you go to Gandaki river and you will find my form. And the revelation that Mahaprabhu gave, that you will soon have my form from the Chila, and that's appearance of the Radha Ramanji. That is the revelation. And the T of that heart stands for transformation. Spiritual transformation of Gopal Bhatta Goswami. Just a young boy who got transformed just by the association of Chaitanya Mahaprabhu. Sadhu Sangha, love matra sadhu sangha. A mere association for a moment with sadhus will change your life. That was the transformation happened in the life of Gopala Bhatta Goswami. Transformation happened in the form of renunciant scholar. Everybody is a scholar, but can you be a renunciant scholar? You can't be. That is what Gopal Bhatta Goswami preaches. Despite leaving all the worldly affairs, he transformed his life through a bhakti and engaged in the association of Rupa and Sanatan and composed a lot of literatures. And the same impact was on Srila Sanatan Goswami. How Sanatan Goswami was so much affectionately connected with Srila Gopal Bhatta Goswami, it created a ripple effect in amongst all the Srila Goswamis. And the transformation, the bigger transformation was of the Shaligram Shila to a Radha Ramanji's deity. And transformation of other souls like us who are hearing the glorious pastime of Srila Gopala Bhatta Goswami. So actually, I wrote today that you bring your heart to walk on this heartfelt journey. So actually, to understand this heartfelt journey of Srila Gopala Bhatta Goswami, you really need that heart. So that is what the spiritual alchemist touch of Chaitanya Mahaprabhu is, the true and eternal alchemist who touched the life of Srila Gopal Bhatta Goswami, and that's how we had a quick tour on the Srila Gopal Bhatta Goswami. Thank you so much everyone. Hare Krishna. Any questions? Gopal Bhatta Goswami's birth. 1503. Trayodasi of 13th day of dark moon. 13th day Trayodasi Paush month mein. And he passed at the age of 75. Again, there is a detailed description. I can share that when he passed. For us, it would be in the month of June, July, I believe so. Trust, if you want to really understand and have a role model, visit the life stories, sketches of our
गोस्वामीज, इतने चीज़ है ना सीखने के लिए. ये तो अगेन व्हेन विल बी अगेन गोपाल भट्ट गोस्वामी का नेक्स्ट जब अपीयरेंस रहेगा, आई गिव यू न्यू स्टोरी. बस इतनी सारी चीज़ें व्हेन यू कॉन्टम्पलेट, व्हेन यू हियर थ्रू द स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रेट डिवोटीज, यू गेट बिविल्डर्ड. ये रियलाइजेशंस होता है. दैट्स हाउ आई ट्राई टू ये पास्ट टाइम आपको याद नहीं रहेगा, बट जो क्वालिटीज़ आप ले जा सकते हो आज इनके लाइफ से, ये हार्टफेल्ट जर्नी आपके लिए भी रहनी चाहिए. दैट्स व्हेयर आई थॉट टू समराइज दिस इन अ एक्रोनिम लेड वर्ड. एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू सो मच. लेट्स गो फॉर प्रसादम. हरे कृष्णा.